Hello everyone. Good morning. How are you all? I hope you all well. So, today we are going to start lecture number 3 of chapter 4 from CC part, Commercial Correspondence. We had done already 2 lectures of this chapter. In that lectures, we studied about what is insurance, need of insurance, types of insurance, etc. And also we were doing 2 example letters regarding the inquiry of insurance policy and additional benefits, right? So now we are going to start a next example. So come to the chapter 4 CC part. Yes, here it is, chapter 4. In first lecture of this chapter, we had studied about the introduction part, then what is insurance, necessity of the insurance, and types of insurance. And in last lecture, we revised all that topic again, and then we're doing 2 example letter, right? I hope you all remember that. And main thing is that I hope you all have seen that video. And now uh, we start with the third letter. Come to the page number 55. Yes. That is inquiry about the revival of lapsed life insurance policy. First letter was about the inquiry about various life insurance policy कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, अबाउट दैट. देन सेकंड वन, inquiry about the additional benefit available on the life insurance policy. Already you have a policy and on that policy कौन से additional benefits available हैं regarding that inquiry वाला second. And now that is third one is inquiry about revival of lapsed life insurance policy. So what is revival of lapsed life insurance policy? मैम ये क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड तो इट्स इजी कि भाई एडिशनल जो भी बेनिफिट्स है वो, एंड इंक्वायरी करनी थी सिंपल से कि भाई वेरियस टाइप्स ऑफ LIP. बट ये है रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड मीन्स मैनी टाइम्स हैपन लाइक दैट कि कोई पर्सन प्रीमियम पे करना भूल जाता है और कोई एनी अदर रीजन्स, मोस्टली रीज़न इज़ दैट फॉरगॉट टू पे प्रीमियम. मोस्टली ये रीज़न होता है कि जिसकी वजह से आपकी जो पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो लैप्स्ड हो जाती है. तो उनको कैसे रिवाइव करना, हाउ टू रिवाइव दैट, तो उनके रिलेटेड हमें इंक्वायरी करनी है. सो हाजी उस्मान गनी केरीवाला has realized that he has forgotten to pay a premium of the life insurance policy he purchased earlier. Write his letter of inquiry for the revival of the same. एक पर्सन है हजी केरीवाला. He had already purchased earlier one LIP, and this time he has forgotten to pay the premium. So how to revive that policy? Regarding that, we write the inquiry letter. Okay. So first individual. So write inside first name, address and date. As usual, same. Then opposite side, same line, name की phone number. यहाँ पे 1 line skip, यहाँ पे 1 line skip. Then managers, that is receiver, and receiver address. Clear? Good.
Then just a second. Yeah. Then subject and reference both. See, you can use dear, respected, anything. Here it is Janab because name जो है हाजी केरी वाला वो ऐसा लगता है कि भी वो कास्ट के रिलेटेड होने लग रहे जनाब वर्ड यूज़ किया है बट इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज टू वर्ड जनाब यू कैन यूज डियर ऑल्सो सॉरी hello ma'am or sir respected sir or ma'am anything. So here subject inquiry about the revival of lapsed LIP. As I told you earlier कि भी subject आपको question में से मिल जाएगा right. You have subject in your question so you can identify easily and write it down. Then reference. मैम reference कब लिखना है जब आप कोई ऐसी इंक्वायरी करते हो ऐसे लेटर लिखते हो कि भाई आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है यू हैव बॉट ऑलरेडी दैट पॉलिसी एंड वो पॉलिसी के रिलेटेड एनी क्वेश्चंस एंड डाउट you want to know, then only you give the reference in the letter, otherwise not. Okay, so reference number same Jeevan Santosh policy number, then 6 to 7 number digit, then slash, and then 2 3 digit number. With above reference, first para, I wish to inform you that I purchased a Jeevan Santosh policy in 2013. Means before 4 years. As per the pre-decided arrangement, I have regularly paid quarterly premium for 2 years. Wait, I zoom it now and then. Yeah, आपको अब स्क्रीन प्रॉपर दिखेगी मैंने जूम कर दिया है थोड़ा. Yes. So with above reference, कौन सा रेफरेंस विच वन इज जो हमने रेफरेंस नंबर दिखा वो. सो once you give the reference number in your letter, then first paragraph is not an introductory part because with your reference number they can find out your name and other details. Okay, so above reference I wish to inform you that I purchased a Jeevan Santosh policy in 2013 as per the pre-decided arrangement. As per a terms and condition you can write that also कि भाई I have regularly paid premium quarterly for a 2 years. आप जो भी लिखो सेमी एनुअली मंथली ईयरली वट एवर यू लाइक. I went for the Hajj pilgrimage in 2015. See, you must mention the reason कि भाई आपने क्यों प्रीमियम पे नहीं किया. कोई रीज़न होगा ना राइट. सो इन्होंने लिखा कि भाई वो हज पे गए थे and thereafter forgot to pay premium and then I forgot to pay premium. राइट. तो रीज़न दिया है कि भी मैं हज पे गया था तो मैं प्रीमियम पे करना भूल गया था. सो एज अ रिजल्ट आई हैव रिसीव्ड intimation a kind of information or a letter from the insurance company from you regarding the lapse of policy. सो हमें एक ऐसा इंटीमेशन मिला है कि भी मेरी पॉलिसी वो लैप्स्ड हो गई मीन्स चली गई कैंसिल हो गई. So I'm interested in reviving the above lapsed policy and request you to supply the following information if you can. So मैं ये जो पॉलिसी lapsed होगी I want to revive that. So I request you to supply all the necessary information if it is possible by you. So first date of last premium paid, then number of installment and premium which is not paid. See first date of last premium paid, then number of installments or premium which is not paid, then total amount left to be paid. So how much amount will be left
That is also you should mention here. Then interest amount on the total unpaid amount, any scheme for interest redemption and document पेपर्स रिक्वायर्ड. जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो. देन रिडेम्पशन मीन्स पे बैक करना. तो कितना इंटरेस्ट है. देन इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अनपेड अमाउंट एक्सेट्रा. जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड भी कर सकते हो बट इतनी आपको कंपलसरी लिखनी है. इफ़ कोई एक या दो आप भूल जाओ तो इट्स ओके, बट ट्राई टू कवर दिस ऑल द पॉइंट्स, राइट. सो ये 5 आपको कंपलसरी, सॉरी 6 है, आपको लिखनी है. बट अगर कोई 1 और 2 रह जाए तो भी ओके, बट 4 कंपलसरी, 4 कंपलसरी है. मस्ट. हाउ मच, सॉरी हाउ मैनी, 4 पॉइंट. ओके. Date of last premium paid, number of installment or premium not paid, total amount left to be paid, and interest amount of the total unpaid amount. Okay. So here we done first two first paragraph regarding the main question and policy you have already purchased, and then second para the main part, crux part of the letter कि भी आपको reason देना है और आप क्या चाहते हो, what you want from the insurance company, you should mention in the second para. And then last paragraph, please furnish the above information. I don't mind coming to your office to complete necessary formalities. Kindly obliged with the promptly reply. तो उन्होंने क्या, प्लीज़ फर्निश द अबव इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, प्लीज़ प्रोवाइड अबव इन्फॉर्मेशन टू अस. एंड मुझे ये भी इश्यूज़ नहीं है कि अगर मुझे जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करने के लिए अगर आपकी ऑफिस जाना पड़े, देन ऑल्सो आई डोंट माइंड. आई एम कमिंग, आई एल कमिंग टू योर ऑफिस टू कंप्लीट रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज़. सो जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है प्लीज़ हमें प्रोवाइड करो. काइंडली ऑब्लाइट विद द प्रॉम्प्ट रिप्लाई. योर सिंसियरली यू कैरी वाला, उस्मान गनी कैरी वाला, राइट. सो इट्स क्लियर, इट्स वेरी easy letter. First, address, senders, receiver, phone number and date. That is very important part of your letter. Then subject and reference, and then main para, second para, sorry, first paragraph, second paragraph. Second paragraph is the crux part of your letter. Second paragraph is crux part of your letter. ये. And your first one है, in normal letter first paragraph is introductory paragraph, but in this kind of letter first paragraph is reference related paragraph regarding that policy which you have already purchased before. Okay. So here we done this example letter, and now we are moving on next letter, letter number 4. Come to the next page. हम एक्स्ट्रा लेटर्स भी लिखेंगे बट फर्स्ट वील ट्राई टू कंप्लीट टेक्सचुअल लेटर एंड देन विल राइट अ न्यू लेटर्स. ओके. Yes. Fourth one, letter requesting changes in the mode of premium payment. हमें रिक्वेस्ट करनी है, वी रिक्वेस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी अबाउट द मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट चेंज. सो वो कैसे रिक्वेस्ट करनी है और क्या लिखना है और क्यों हमें चेंज करना है वो भी हमें बोलना पड़ेगा. वी शुड मेंशन दैट द रीज़न फॉर चेंज. ओके. सो मिस्टर विजय Tandal wishes to get
or a duration of premium payment change. Write his letter of request to the insurance company, which it handle address, then one line skip, and then date. Then opposite side receiver's address and job designation set to the manager. Then sir or ma'am, whatever you like. You should write here sir or ma'am. Subject request for change in mode of premium payment and reference. मैम ये रेफरेंस तो सब में आता है, तो आप यही लेटर्स लिखते हो ना जिसकी पॉलिसी आपने ऑलरेडी परचेस्ड की है. यू हैव ऑलरेडी परचेज दैट पॉलिसी एंड रिगार्डिंग दैट आपको क्वेश्चंस है, तो आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा कंपल्सरी. With above reference, I wish to inform you that I purchased Jeevan Pramod policy in 2012. I have also paid regular premiums thereafter. While purchasing the policy, keeping in mind my circumstance, I had opted for the half yearly mode of premium payment. So, in first paragraph, simple, I purchased this XYZ policy and I also paid regular premium and blah blah blah. Same as. Then in second paragraph, that is main paragraph. While purchasing the policy, keeping in mind my circumstance, I had opted for half yearly mode of premium payment. And now with easier availability of the fund, I am in a position to pay larger amount on yearly basis. क्या बोला? वाइल परचेजिंग द पॉलिसी, जब मैंने परचेज की थी पॉलिसी तब मैंने सारी सर्कमस्टेंस माइंड में रख के डिसाइड किया था कि मैं हाफ ईयरली पेमेंट करूँगा, मीन सेमी एनुअली 6 मंथली, राइट. But I am in a position to pay larger amount on the yearly basis. As I understand, the amount gets less by paying it the yearly mode as compared to the half yearly. As explained by LIC agent, I shall have to pay 21,000 once a year. जैसे उन्होंने रीजनेबली नाउ आई अंडरस्टैंड दैट कि भाई जैसे मुझे एल आई सी एजेंट ने एक्सप्लेन किया था कि मैं हाफ ईयरली मॉड में पेमेंट करूँ कंपेयर टू दैट ईयरली में मैं पे करूँ तो वो मेरे लिए ईजी रहेगा एंड बेनिफिशियल रहेगा. तो भी मुझे ईयरली पेमेंट करना है. आई शैल हैव टू पे 21,000 वंस अ ईयर में वन टाइम मुझे 21,000 पे करना है विच इज़ एक्सेप्टेबल टू मी. If the change I wish is possible, kindly do it instantly. And अगर ये change possible है करना तो जितना possible उतना जल्दी immediately instantly आप कर दो. I shall come to your office to complete necessary formality if need be. If any requirement, if it is necessary, then I shall come to your office and complete all the necessary formalities and I expect that a prompt reply from you. और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बहुत जल्दी रिप्लाई करोगे. ओके, थैंक यू एंड योर सिंसियरली. है कुछ टफ इसमें? नहीं, बहुत इजी लेटर्स है. इजीली यू गॉट गुड स्कोर, एटलीस्ट 4.5 out of 5. Easy you will get easily. The main thing is that proper presentation, then neat and clean लिखना है, बॉक्स बनाना है, एड्रेस, सब्जेक्ट, एनक्लोजर्स हो दैन इफ एनी, ये सब अच्छे से लिखो. यू गेट 2 mark. एड्रेस, हेडिंग, सब्जेक्ट 1 mark एंड 1 mark जो आप एंड करते हो एनक्लोजर्स हो तो वो, देन बॉक्स बनाते हो, थोड़ा क्लीन लिखते हो, वो सब. एंड 3 mark for 3 paragraph. Okay, so it's your cash mark. Pick up this and पॉकेट में डाल दो. बहुत इजी है ये लेटर. चलो और एक कर लेते हैं. अभी है 5, 6, 7. Then chapter will be done. There is only 3 remaining letter and then we'll done this chapter. Yes.
सो फिफ्थ लेटर है लेटर फ्रॉम नॉमिनी असाइनी claiming insured amount of the LIP after the death of the insured. ये एक लेटर करेंगे. देन हम थोड़ा एसपी का करेंगे. एसपी के चैप्टर फिफ्थ में से थोड़ा करेंगे. फर्स्ट वी डू दिस फिफ्थ लेटर एंड देन विल स्टार्ट एसपी चैप्टर फिफ्थ, बिकॉज ये लेटर बहुत ईजी है, राइट. तो हम थोड़ा ऐसा टॉपिक बीच में करेंगे कि जो कुछ इंटरेस्टिंग हो और आपको कुछ मज़ा आए. तो वो हमारा एसपी में है. यस, तो ये लेटर क्या है. यस, तो लेटर फ्रॉम नॉमिनी और असाइनी बोथ आर सेम सिनोनिम से. क्लेमिंग इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ द एलआईपी आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड मीन्स जो पर्सन का इंश्योरेंस लिया है उनकी डेथ हो गई. आफ्टर दैट जो भी नॉमिनी है उनको इंश्योरेंस है, पॉलिसी है, वो क्लेम करनी है. सो हमें दिया है राइट अ लेटर फ्रॉम मिस्टर ब्रैंडन फ्रैंक इंटीमेटिंग LIC ऑफ इंडिया the death of his father, Mr. Anthony Frank, and claiming the insured amount as a nominee. देखो डेथ इंश्योर्ड पर्सन है मिस्टर एंटोनी फ्रैंक एंड सन ऑफ दैट पर्सन इज मिस्टर ब्रैंडन फ्रैंक. वो LIC ऑफ इंडिया मीन्स LIC को लेटर लिखता है कि भाई मुझे ये मेरा जो पॉलिसी है मेरे फादर की वो मुझे अभी क्लेम करनी है. सो मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेम, डेट, रिसीवर्स एड्रेस सेम एज सब्जेक्ट देन सर. हमें सर है वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखना है कंपलसरी. टेक्स्ट बुक में दिया है मैम सब्जेक्ट के पहले, इट्स ओके, बट वी शुड राइट आफ्टर सब्जेक्ट एंड रेफरेंस. ओके. विद द अबव रेफरेंस I wish to inform you that my father, Mr. Anthony Frank, had purchased a Jeevan Utsav policy in 1988. देखो, the name of the policy purchased by you, you can write it's a acceptable name like जीवन उत्सव, जीवन संतोष, बिकॉज ये LIC है तो कुछ ऐसे नाम लिखना है जो जनरली एक्सेप्टेबल हो, राइट. और एल्स टेक्स्ट बुक के लिख दो, इट्स बेटर. Had regularly paid premium thereafter. I would herewith like to inform you that he died a peaceful natural death on 30th November 2017 at home. देखो उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ माई फादर इज़ नो मोर राइट नाउ एंड he had purchased a policy in 1988 and regularly paid premium. उन्होंने एक पॉलिसी परचेज की थी और उन्होंने प्रीमियम भी रेगुलरली पे किया था. बट नाउ ही इज़ नो मोर. अब उनकी डेथ हो गई है. इट्स अ नेचुरल डेथ. और कब हुई? ऑन 30th नवंबर 2017. ये आपको ध्यान रखना है. आप यहाँ पे जो डेट लिखते हो ये 5th December 2017 वाली, राइट. ये जो एंड यहाँ पे जो आप डेट लिखते हो, सॉरी डेट, तो वो पहली वाली डेट से प्रायर होनी चाहिए बिकॉज डेथ पहले होती है देन आप लेटर लिखते हो. ओके. एज पर द पॉलिसी डिटेल आई बीइंग a nominee and officially entitled to claim the insured amount. So as per the policy details documentation, I am being the nominee and I'm officially, मैं अभी क्लेम करने के लिए हूँ. Officially I am entitled to claim. So I request you to send a claim form to complete the procedure. कि भाई जो प्रोसीजर वो कंप्लीट करने के लिए जो भी XYZ फॉर्म है वो आप मुझे सेंड करो. एंड a copy of the death certificate of Mr. Anthony Frank is enclosed with this letter. बिकॉज हमें प्रूफ भी देना है. We should attach, actually not should, we must attach the death certificate of insured person. Okay. So देखो हमने यहाँ पे लिखा है I enclosed with this letter. Then
At the end of this letter, you should mention here enclosure. See, because यहाँ पे आपने mention किया कि पे you are enclosed with this letter. So here you have to mention enclosure. What is enclosure? अब जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हो साथ में वो तो कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हिज फादर. So I expect prompt reply and help for the smooth completion of the procedure from you. थैंक यू योर फेथफुली. फर्स्ट पैराग्राफ सेम है. सेकंड पैराग्राफ में जो भी रीजंस था उनके फादर की डेथ हो गई है, कौन से डेट पे डेथ हुई है, XYZ जो भी है वो लिखना है. नेचुरल डेथ है तो वो भी लिखना है, सुसाइड है तो वो भी लिखना है. एंड देन सेकेंड पैराग्राफ है, दैट इज़ लास्ट वन. उसमें कि भी मैं डेट ऑफ सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूँ और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ प्रोवाइड मी and kindly help me out for smoothing completion of procedure from you. Okay, so now it's done here. I hope you all clear. So today uh, we have just complete 3 example letter. First, इंक्वायरी अबाउट द रिवाइवल ऑफ लैप्स लाइफ इंश्योरेंस. मैम वो क्या था कि भाई आप प्रीमियम पे करना भूल गए हो, यू फॉरगेट टू पे प्रीमियम, तो आपकी जो पॉलिसी वो लैप्स्ड हो गई, तो हाउ टू रिवाइव दैट. दैट इज थर्ड एग्जाम्पल लेटर. देन फोर्थ वन is a change in mode of payment, means yearly means semi yearly, from semi yearly to means semi annually, sorry, from semi annually to annually, then from annually to semi annually, quarterly to annually, whatever it is. Then fifth one is letter regarding the claim after the death of insured person. Okay, so here we done this 3 letter. I hope you all cleared about this. And in today's homework, yes, come to the page number 60. Please note down the homework. Letter number 1, letter number 2, 3. Yes, first, second and third homework. Okay. So here we done today's lecture. I hope you all clear. And from the next lecture we'll start a new chapter from SP part. And we'll done this chapter because in this chapter there is only 2 letters remain. Right? 6 and 7 example letter. And then we'll done this chapter. And we'll start a new chapter from next lecture. Okay? So here we done. Please homework mat bhulna. Okay? Goodbye everyone.